Hello everyone, how are you all? I'm good, sir. How about you? Yeah, good, all good. Thanks for asking.
How was the retest? Is the result out for all of you? Whoever has given. I think result कल है sir. Result will be tomorrow, I think. Hello, am I audible? Hi, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. And tell me, how are you all? Just give me two Fine. 3 minutes to Fine, set up sir. everything. Okay, how is everything going on? And is the retest results done? So tomorrow. Tomorrow there will be results of retest. Yes, sir. Tomorrow is the result. Whoever has given, how was the exam? How was the retest exam? I think many among us has gone for a batch change, right? Or it is possible that many people don't join the classes every day. Okay, so let me take one of the most important topics of our entire series of lectures, that is dynamic programming. Okay, fine. So let's start with a simple program. Let's start with a simple program.
Just give me a few minutes. I guess अब तक ये खुला नहीं है. Is it? Okay, how many of you remember what is the Fibonacci series? Can Sir, anybody last two give- number का addition बताना. And what is the first and last numbers of a Fibonacci series? Sorry, first and second number of a Fibonacci series. 0 One and and 1. one. Okay, for a Fibonacci series, what we have? First two numbers are 0 and 1. What will be the third number? So one, 1, What will be the 2, fourth number? two, What will be the fifth number? 3, three, What will be the sixth number? 5, 5, right? 8. Okay, so this will go on. So what is the relation? How do we define the nth Fibonacci? How do we define the nth Fibonacci? So add previous both numbers. We say that, okay, calculate Fibonacci of n minus 1th term and calculate Fibonacci of n minus 2, this term, and add them. This will fetch you the nth Fibonacci. Am I correct? This is how we have calculated the Fibonacci series. Is it? Am I saying the correct thing? Tell me Yes, sir. that. Sir. Yes, sir. Okay, let's see that. So how will I write the code for it? Let's take that. Let me comment everything out here. Regarding one thing, please all of you attend this Saturday. I will take 3 topics positively in this Saturday. One is how to implement the Heapify operation. The BST problem. Okay, that you have got inside your CC, I guess, whether to check for BST or not. These 2 topics I will positively take this Saturday, as well as how to implement using this heap queue method. How can we implement max heap? Whatever example we have taken, we have seen it using min heap. Okay, how to implement max heap also we will try to figure out using this heap queue library on this Saturday. These 3 topics positively I will take. Please attend, or if anybody is failing to attend, cannot attend for any reason, please watch the video. Okay, sounds good? Tell me that. Yes, sir. So Okay, yeah. Okay, fine. But yeah, we have to step into some new topic because time is less for dynamic programming, and we have to at least finish a decent part of it. Okay, to get a deep understanding what is dynamic programming. Fine, yeah. So let's see here. Let's see. is it dynamic programming? Yeah, today we are starting with dynamic programming. But yeah, before that, I will start with what an example that what is the Fibonacci series. So, okay, let me calculate for the Fibonacci series. Let me give the title. Dynamic. Okay, so let me define a function that will calculate the Fibonacci series. Fib, okay, and let's say it takes a what variable in that I want to calculate the nth Fibonacci. So, okay, 2 conditions that I can directly give the answer. I don't need to calculate anything. If I arrive at 2 conditions, I can directly give the answers. That is the base condition for it. What are they for Fibonacci series? What are the base conditions for calculating Fibonacci series? Addition of last 2 digits. No. That is how we calculate the nth Fibonacci. So if 1, then return 1. If n equals 1, that okay. If I am to calculate the first Fibonacci, what I can say? Return 0. Okay, the first Fibonacci is 1. Else if that I am to calculate the second Fibonacci, return 1. I can give a direct answer for this. Am I correct? Yes. No need to calculate anything for that. I can give a direct answer. If I require to calculate the first or the second Fibonacci, they are fixed.
No need to calculate anything. You can give a direct answer for that. Am I correct for that? That okay, you can do. Else, if I want to calculate other Fibonacci numbers, what I have to do? Return fib of n minus 1 plus fib of n minus 2. Okay, that I have to calculate the n minus 1th Fibonacci and the n minus 2th Fibonacci. These two Fibonacci numbers I have to first calculate, then I will add them and I will return the result. This is what is required for calculating the nth Fibonacci, right? So my code is done. Let's test it. Let's test this. Okay, print. Let's say what Fibonacci you want to print. Tell me that. Let's say I want to print the fourth Fibonacci. Let's say. Print FB. Yeah, you're print the fourth Fibonacci. This is what is required. Yeah. Okay, so let me test it that I am getting the correct result or not. PyTest.py. Okay, so is it the correct Fibonacci? The fourth Fibonacci that I want to calculate will be 2. True or false? True, sir. True, sir. 0, 1, 1, 2. The fourth Fibonacci is 2 only, right? So, okay, let me try to calculate some other Fibonacci numbers. Let's say I want to calculate the 11th Fibonacci. So I want to calculate the 11th Fibonacci. I haven't saved it, right? Okay, am I getting the correct result? 55? Tell me that. Is the 11th Fibonacci equal to 55? Yes, sir. Can anybody verify 11th Fibonacci is 55 or not? First one is 0, second one is 1, third is 1, fourth is 2, fifth is 3, sixth one is 5, seventh is what? 8, eighth is what? 13. 13, 13, ninth is 21. 21, 10th is 30. 34. 34 plus 21, 55. Okay, so we have successfully calculated that 11th Fibonacci will be 55. Okay, if I carry on this, let me try to calculate the 20th Fibonacci. Let me try to calculate the 20th Fibonacci, and let's see whether we are getting any result or not. Okay, it is coming, right? 4181. A result is coming 4181. The 20th Fibonacci I have successfully calculated. Let me go ahead with the 35th Fibonacci. Let's see. Okay, that means the 20th Fibonacci, I have got the result instantly, right? No need to wait, but after some waits, some seconds I have to wait. After that only I've got the 35th Fibonacci. Have you noticed that? Yes, sir. Let me try. Let me give you an example here. See, 4181 instantly printed, but after some amount of wait, I have got this result. Getting the difference? How much time it is taking? Only the 35th Fibonacci only. We are not that, okay, 10 to the power 6 Fibonacci I require, or 1000 number of Fibonacci I require. I am just calculating the 35th Fibonacci, and that is taking at least some time to be calculated. Okay, let's try with the 100th Fibonacci. 4181 instantly printed. Now see. After some time, 35th Fibonacci got printed. And let's see
What is the time required for the 100th Fibonacci to be calculated? See your watch, everyone, whoever is wearing it. That what is the time I will be requiring to calculate the 100th Fibonacci? So would you mind waiting for so many number of minutes to get this 100th Fibonacci calculated? No, sir. महिमा पेन देखो उसमें रखी होगी और पानी दो छोटी Getting it to. So any idea why this is happening? तो वो रन ही हो रहा है अभी भी। रन तो हो रहा है, कैलकुलेशन करने में देर लग रहा है। See, it is still not calculated. 2 minutes, I think, have passed, right? And for doing your job, for doing your calculations or entire coding part, 1 second only will be given to you. And rather we have passed 2 minutes. Why this is so? 35th took some time, at least 2-3 seconds. 35th Fibonacci took. Before 1 second, I have got the 20th Fibonacci. But this is still not calculated. See, what's the heck here? Nobody knows. Let's stop this process and let's try to figure out what is happening. So वो 100 times function call हो रहा होगा उसके से लेट हो जाएगा। 100 टाइम बार बार फंक्शन कॉल हो रहा होगा उसके से लेट हुआ होगा। Okay, see here, see. Let's say I want to calculate the 4th Fibonacci. Or yeah, let's say we want to calculate our 4th Fibonacci. Okay, first what will happen? As per the given code, what will happen for calculating the 4th Fibonacci? Who will tell? True, sir. What true? So fourth Fibonacci 2 रहता है ना 2. नहीं, process क्या होगा? पूछना वो है. So पहले function What will call होगा fib n-1. What will happen? Try to figure out using this code. What will happen? If I am calling that, okay, I want to calculate the 4th Fibonacci. Are these conditions true? These two conditions are true No, sir. for this, because I'm calculating the 4th Fibonacci for this function call n equal to 4. Okay, so these conditions are false. Now see, return Fibonacci of n-1 plus Fibonacci of n-2. What will happen in this line? First Fibonacci of n-1 will be calculated. Okay, that this function will be called Fibonacci of n-1. That okay? For calculating the 4th Fibonacci, for calculating the 4th Fibonacci, I need Fibonacci, the 3rd Fibonacci. Okay, this is a new function call. Right? This is a new function call. So as per the laws of recursion, I have to first address this, calculate the result for this, then I can go back. Fine. New function, execution starts from the beginning. Tell me. N equal to, let's keep a track of what function calls we have made so far. F of 4 is there and f of 3 I have made just after calling f of 4. Okay. So f of 3, fine. If n equal to 1, are these two conditions true for this function call? No, sir. How many of you agree with Shazia? That these two conditions are false for this function call. How many of you agree with Shazia? Yes, Agree, sir. sir. Okay, right.
So what will happen if these two conditions are false? It will execute the return statement, right? For executing the return statement, it has to first call a fib of n-1 from itself. That okay, for calculating Fibonacci of 3, I have to first calculate Fibonacci of 2. Right? Fibonacci of 2. Now say I have made a call to Fibonacci of 2 also. Now new function. Am I correct? New function, it will be executed first, then only I can go back to Fibonacci of 3 for calculating that. Now see, if for Fibonacci of 2, I have to again start from the beginning. Now see, if n equal to 1, return 0. True or false? Any of the condition is true for Yes, this sir. function call. Which one is Second true? one. Second one. Second is true, first is false. Okay, so if second is true, then I have to return 1. It will return 1 where? It will return 1 where? To the Fibonacci of 3. Am I correct? Yes, sir. So Fibonacci of 2 has completed the execution. It has returned 1 to Fibonacci of 3, right? To Fibonacci of 3. Let me keep it here only, right? Fibonacci of 2. Okay, this one. Now tell me what will happen. It is now, since it has returned 1 to Fibonacci of 3, the flow of control is inside Fibonacci of 3 right now. So this part is calculated. This number has been calculated for Fibonacci of 3. What will happen next? Fib of n-2 will be calculated. Now this part will be executed, right? After calculating this part will be executed. Fib of n-2. Let's go here. F of n-2, right? So f of 1 will be called from here. F of 1 will be called from. So another function comes into our list, f of 1. Fine. That okay. F of result for f of 2 we have got. Now I require f of 1. Fine. So okay, this is a new function call. This is a completed function. Let us box it for a distinction that this has completed the execution and has returned 1 to f of 3. Fine. Okay, now f of 1. This is the most recent function call that I have made. So okay, this has to calculate first. Okay, new function, start the execution from the beginning. N equal to 1, return 0. Is this condition true for this function? Yes, sir. So what will happen? 0 will return to the f of 3. Okay, 0 will return to the f of 3. Fine. So this also has completed its execution. Fine. Now tell me what will happen to f of 3. Both have got completed and we have again calculated result for f of 1 also. And the result that we have received from f of 2 is 1. The result that we have received from f of 1 is 0. Fine. So now I am inside f of 3 and f of 3 have received Fibonacci of n-1 as 1 and Fibonacci of n-2 as 0. Now what it will do? It will add both of them. Add both of them. It will add both of them, right? And it will return, right? Return to f of 4. Okay, fine. Now it will add this 1 and 0 and it will return to f of 4 value of 1. So, okay. Is this f of 3 returning the correct value? Third Fibonacci? Yes, sir. F of 3 is returning what? The third Fibonacci or not? Who will tell? Yes, sir. 0, 1, 1. It's third. F of 1 returned 0. That is the first Fibonacci. F of 2 returned 1. That is the second Fibonacci. F of 3 returned 1. That is the third Fibonacci. Getting it? Is this point clear? That what is the f? Whatever is the value of n inside my f, that amount, that numbered Fibonacci will be returned to the previous function call. That's it. Okay. Fine. So, okay, f of 3 has completed execution. It has returned 1 to where? F of 4. So, f of 3 has completed the execution. The result that I have received from f of 3 is 1, right? Now, I am back at what? This function call is complete. I am back at where? F of 4. I am right now standing at f of 4. F of 4 has completed its part till where? Till which point? So fib n-1. Till this point only. Yes, sir. After calling the fib of n-1, f of 4 was waiting, right? So it has got the result for fib of n-1 as 1. Now what it will do?
Fib n minus 2 will be It will calculated. call for this function fib of n minus 2, right? So let's take it a bit further. What is the fib of n minus 2? 2 only, am I correct? Yes, sir. So, okay, this is the most recent function call. Most recent function call, execution starts from the beginning. So see, if n equal to 2, return 1. Is this condition true for this? Yes, sir. So it will return from here what? It will return from here 1. what? 1. Okay, fine. And after returning C again, so this is completed. Now Fibonacci of 4. Fibonacci of 4 is having what? Fibonacci of 4 has completed both the executions of fib of n minus 1, fib of n minus 2. Result I have received from fib of n minus 1 is 1. Result I have received from fib of n minus 2 is 1. So what will be the final result? It will be returning inside the print statement. 2. 1 plus 1, 2, right? So that's why I'm getting the result. I will get the result as 2 inside Fibonacci of n minus 1. Okay, fine. So is this example clear to all of you? How the Fibonacci series is being calculated? Yes, sir. Yes, sir. All of you? Yes, sir. True or false? Any doubt till here? Okay, let's go to some broader example. Let's say I want to calculate Fibonacci of 6. Fibonacci of 6. Now see, now tell me what will happen. Fibonacci of 6. It will first call Fibonacci of 5. 5, right? 5. Fibonacci of 5 will call 4. Fibonacci of 4. Fibonacci of 4 will call 3. Fibonacci of 3. Fibonacci of 3 will call 2. fine. From here, the return part will be starting. Am I correct? It will return to where? It will return 1 to the previous function call, right? And after calculating Fibonacci of 2, it will call for Fibonacci of 1. Am I correct? So it will again return 2. Sorry, it will return 0. Okay, after calculating this, it will return 1 to the previous function call, and it will call for Fibonacci of 2. Okay, and it will return 1. Fibonacci of 4 will return what? Fibonacci of 4 will return what? 2. 2 to the previous function call, and then it will call for Fibonacci of 3, right? Fibonacci of 3 it will call for. Okay, fine. And Fibonacci of 3 will again call Fibonacci of 2. Not the 1. Fibonacci of 2, right? First Fibonacci of 2, then it will call Fibonacci of 1. Okay, Fibonacci of 2 is getting called how many times? Fibonacci of 2 returns what? 0. Sorry, it returns 1, it returns 0, and it returns what? 1 to its previous function call. Fine. And then finally Fibonacci of 5 returns what? 3 to the previous function call. Right? Okay. One thing, have you noticed why we are again and again calling these functions? Fibonacci of 2, Fibonacci of 2, Fibonacci of 2. I have already calculated here only, right? The value, what value I will be returned from Fibonacci of 2. And see, this Fibonacci of 3 and Fibonacci of 3, both are again and again getting calculated separately. I have, see, once I execute Fibonacci of 3 here, I know that it will be returning 1. So why am I again calculating this? What's the point? Any ideas on this? Any thoughts? So it's a recursive function, so it's a process we have to call. Yes, definitely. But is it a good process? That okay. At this point, I am calculating what I will get, what result I will get from Fibonacci of 3. But again, I am calculating the same thing for at some other point. Why to do it? We already know what result we will get from here.
Let's store it somewhere better. Don't you agree with me? Yes, sir. Once I have calculated what result I will get from Fibonacci of 3, let's store it somewhere. So that whenever the need will be requiring, I won't make any more function calls. That's whatever result is stored here, I will directly return from here. I won't call any more functions to calculate this. Getting the point? Getting the point Yes, or sir. not? Tell me who are having doubt here. First, tell me who are having doubts. Then only I will move ahead. Shall I assume everyone has understood everything? Since there are no doubts. Tell me that. Yes, sir. Okay. My point is, see, while I was calculating the result of f of 4, right? I have already calculated the result of f of 3. I have got some results from f of 3. But yeah, while calculating f of 5, I was again in requirement that, okay, for calculating f of 5, I had to get the result of f of 3. So again, f of 3 will call for f of 2 and 1, then it will calculate itself and will return some value. My point is, once I have got the result from here, why not to store it somewhere? So if I store it, I won't call. If I am again in the need of, okay, that this f of 3 has already been calculated, I have a result for it. Fine. Now again, I am requiring that for calculating f of 5. What I will do, I won't call any more functions for it. I will directly return the result that I have calculated earlier. Getting my point? Okay. Yes, sir. So what we are doing, if we are storing the result, these redundant function calls, redundant means repetitive function calls are getting reduced. So let's see how it will impact our program. Okay. So what we can do is that we can store it somewhere. Let's say I have Fibonacci and that is a list. Okay. Fibonacci and that is a list. And what I will do, okay. Okay, how can I declare a list? Let's say I have list of Fibonacci numbers. I want to declare, I want to store the first 100 Fibonacci numbers. How can I do that? I want a list of length 100. How can I do that? सर साइज देना जरूरी नहीं है ना. साइज देना जरूरी नहीं, बट अब मैं करना चाहता हूँ. मैं जानता हूँ मुझे 100 नंबर की फिबोनाची कैलकुलेट करनी है. क्या करूंगा? सो एक काम करते हैं, एक 100 लिस्ट की लिस्ट बना लेते हैं. कैसे करेंगे? Calculate 0 into 100. I think this will work. Okay. Initialize the value. Okay. That one value inside the list is there. And do what? Multiply that with 100. Okay. So you will get a list. So let us print it first and see. List fib. Okay. What it is coming. Okay. See, a list of 100 elements have been created. Okay. And each and every element has a value 0. Getting it? This is how I calculate. I create a list of 100 elements and all elements, because I've given a 0 inside my list. Okay. All elements of my list will be initialized to 0. Getting it?
Getting the point? Tell me that. Now let me do one thing. While I'm calculating the values, let me assign everything. List fib of n. List fib of n. Let it be equal to 0 here first. That okay. The first Fibonacci is 0 as well as list fib of n. Okay. That will be equal to 1. Okay. And return 0 and 1 respectively. That's what I will be changing. Now see, I will add another condition. Okay. I will first check this list. So one thing I have missed here, since this is a global variable, let's initialize that. Okay. This global list of Fibonacci I will be using inside my program. Okay. Now one thing, before going to the calculation part, I will check inside the list whether I have some value or not. I will check inside the list whether I have a value or not. Okay. So I will check here. If list fib of n is calculated, so how shall I do that? How shall I do that? I want to check whether this nth Fibonacci inside my list is already calculated or not. How can I do that? Any idea? So if I calculate a Fibonacci, number, let's say I have 0th Fibonacci, first Fibonacci, second Fibonacci, third Fibonacci. Can I say that whenever the first, second, third, fourth Fibonacci is being calculated, inside the list, their values will be greater than 0. Will it be sufficient? That okay. The second, third, fourth Fibonacci has already been, if it is calculated already, its value will be non-zero inside the list. Can I utilize this fact? What will I write? If list of Fibonacci of n is greater than 0, do what? Return from here directly whatever is being kept at list Fibonacci of n. Fine. If it is not true, if all the numbers I have initially initialized to 0, this 0 marks that okay, this current position does not have any Fibonacci value inside it. Okay. So instead, I have to calculate the entire result. So if this part is not true, I will keep on calculating the result. Now let's try to calculate our result. Okay, let me clear it out from here. No requirement of this as of now. If this is true, which Fibonacci you want to calculate? Tell me now. Let's say I want to calculate the 35th Fibonacci. Okay, now one thing. After, let's say, let's don't do anything like this, but rather let's calculate one thing. Fib 1, let it be equal to fib of n minus 1. Then next, fib 2, let it be equal to fib of n minus 2. Then let us store inside the nth slot of my list of Fibonacci. Inside the nth slot of my list of Fibonacci, let us store their addition. Fine, and then return it from here. Return this fib of n, right? Let's do it now. And now let me calculate the 35th Fibonacci. Let me calculate the 20th Fibonacci also. And let me calculate the 35th Fibonacci also. Okay. And along with it, let me calculate the 95th Fibonacci. Okay. And let us see whether we are getting some good results or not after doing this. Py. What is it?
Okay, so indentation error is there. So written one है ना? So line number Mhm. 361. Yeah, thanks for telling. So tell me, have I got 3 results instantly? No delay, no lags. Have I done it correctly? Yes, sir. So what do you think? What do you think? What was the cause that before storing our results, we were getting so much of, it was taking so much of time to calculate the nth Fibonacci. Even 35th Fibonacci took some good amount of time, right? 2-3 seconds at least, or 5 seconds, let's say, Result will be where will be storing, sir? inside this list of Fibonacci. Inside this list, I am storing the results. What do you think? What has caused me so much of delay in calculating the 35th Fibonacci? And had I calculated using the same recursive approach, the 95th Fibonacci would never have been calculated at all. Maybe after some 15 minutes, let's say, you will get the result. Will you wait for that? So what do you think? What would have been the issue? That my if I try to calculate the 95th Fibonacci, I have to wait for 10 to 15 minutes to get my result. And if I utilize some storage, I am just within 1 second, I am getting my result. What do you think? What is the result? सर वो उसका फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, बार बार वो टाइम बच जा रहा है, और जो भी Yes. कॉल हो रहा है तो फिर डेटा स्टोर हो जा रहा है. Yes, exactly. So see, if I'm trying to calculate the 6th Fibonacci, it will call for, tell me what will happen in case of the recursive approach. If I'm utilizing the recursive approach, what will happen if I try to calculate the 6th Fibonacci? What will happen? Somebody tell me. सर वो पहले वो 5 पे जाएगा, फिर 6 4 will पे call जाएगा, 5, 5th Fibonacci, 5 will call 4, and 4 will call 4, 3 will call 2. Okay, fine. This part is done. Next, after 2 has returned something, 3 will call 1. After now 3 will return to 4 some result, 4 will call 2. 2. Okay, now 4 will return some result to 5, 5 will call 3. Getting it? Yes, And sir. for calculating this 3, again I have to call 2 and 1. See, this entire calling is getting repeated. These are what? This 3, this 3, this 2, this 2, this 2, this one, this one. They are called repeated function calls. They are called repeated function calls. Now see again. 4 has written. Now 5 will return some value to 6. 6 will call for 4. Am I correct? 6 will call for 4. 4 will, again, for calculating 4, 4 will calculate 3. Then what will happen? Okay, let me write it just a bit farther. If I am to calculate for 6, I have to calculate 4. 4 will call for 3. 3 will call for 2. Now 2 will again return something to 3. 3 will again calculate 1. Okay. Now fine. 3 will calculate 1. Now again 3 will return some value to 4. 4 will again call for 2. 2 will again return something to 4. And then 4 will return some value to 6. So how many function calls have gone repeated here? How many function calls have got repeated here? This 2, see how many times function 2 has been called? How many times function 2 has been called? 1, 2, 3, 4, 5, right? How many times function 3 has been called? 3 times. 3 has been called 3 times, right? 1, 1, 1, right? How many times function 1 has been called? 2 times. 3 times, sir. Okay, oh yeah, 3 times. How many times 4 has been called? 2 times. Okay, so see, for calculating the same results,
This f of 2 only I am calculating. What result I will get from the f of 2? I have called it 5 times. Getting it? 5 times. F of 3 only I want to calculate. What is the result for third Fibonacci? For doing this, I have done the same thing 3 times. Does it make any sense to you? That okay, the third Fibonacci I need, and I will calculate it 3 times. Whenever I will be requiring that, I will start from scratch. Whenever I will be requiring this third Fibonacci, I will first calculate the second and first Fibonacci, and then using those results, I am calculating the third Fibonacci. Any sense doing this? So these are redundant function calls, repeated function calls. That okay, this same function only I've calculated it 5 times. Same function only I've calculated it 3 times, 2 times. So now how I am reducing this? So for each function call, it requires some constant time k, let's say. For executing each function call, I require some constant time k. Okay, what in your perspective would be the maximum number of function calls here? Maximum number of function calls inside the Fibonacci tree. Sir, What do you and think? Huh? Finding Calculate, Finding the see same. properly. Worst case, how many function calls will be made here? In total, how many function calls will be made in the worst case? What do you think? Observe it carefully and give me a result within 2 minutes. सर क्या मैं तो समझा नहीं पाऊंगा. देखो यहाँ पे देखो कितने फंक्शन कॉल्स है 6. ये क्या है? पूरा ट्री जो है ये किसके रिलेटेड है? फंक्शन कॉल्स कितने हैं? 6 फंक्शन कॉल है, 5 फंक्शन कॉल है, 4 फंक्शन कॉल है, 4 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1. सो ऐसे ही अगर मैं रिकर्सिव अप्रोच लूं तो हाउ मेनी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन कॉल आई मे गेट? What is the maximum number of function call I may get? For calculating any nth Fibonacci, right? For calculating any nth Fibonacci, what is the maximum number? What is the maximum number of function calls I may get? Sir, n into n. Is it? I सर don't इसलिए think so. 6 में 7 बार कॉल हुआ है function. 6 में 7 times. Yes, 6 में तो बहुत फंक्शन कॉल्स है. 6 खुद है फंक्शन कॉल. 5 4 3 6 5 4 4 3 3 2 4 3 3 2. Now 3 2 2 1 2 1 2 1. See how many total number of function calls you have. Can you relate it somehow to perfect binary tree? Can you relate it somehow to perfect binary tree? Observe it carefully. That's why I said. Yes, sir. What result you will get then? सर ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है ना. अभी तो नहीं है, पर वर्स्ट केस सोचो क्या होगा. Because of K login, sir. नहीं. सर n into n plus 1 divided by 2. नहीं. Let's come to the worst case. What our worst case may look like. This is the nth Fibonacci I want to calculate. N minus 1, n minus 2. It requires what? N minus 2, n minus 3. And it requires what? N minus. What it will require? 3. N minus 3, n minus 4, right? Okay. So in worst case, there will be n levels, and it will be a perfect binary tree. All the levels will be filled for calculating Fibonacci. In the worst case, some large number, let's say. Okay.
So if there are n levels, and this is entire number of function calls, sorry, number of nodes that we will get will be a perfect binary tree. So how many total number of nodes? This assume that each node is a function call. Then total number of nodes that I may have is, assume that these function calls are in the form of nodes inside my perfect binary tree. Perfect binary tree. So total number of nodes that I may get here is at level 1. What is the total number of nodes in level 1? 1. Okay, fine. 2 to the power 0. Am I correct? Total number of nodes in level 2. 2 to the power 1. 2 to the power 1. Total number of nodes in level 3. 2 to the power 2. 2 to the power 2. 2 to the power 2. Okay. Similarly, if I go till n levels, what result I will get? 2 to the power n. Is it? 2 to the power n minus 1. Yes, it will be 2 to the power n minus 1 at the last level. At the last level. At the last level, this amount of function calls will be there. So what is the total amount of function calls that I am getting? 2 raised to power n minus 1. Total amount of function calls that I am getting. Okay, had it been, let's say till 3 levels, n equal to 3, then what will be the total number of function calls that I will be having? Till here only my Fibonacci calls are there. Then what is the total number of function calls I will get? 7. 7, right? Till the 3rd level, 7 function calls are there. So is it equal to 2 to the power n minus 1? True or false? Yes, sir. So similarly, if I have n levels, will sum of all function calls will be equal to 2 to the power n minus 1. Can I relate? Total number of levels, let's say, is 3. So my total number of function calls is 7. That is equal to 2 to the power n minus 1. If n, bolo. Please repeat it a little bit later. Okay, see, calculate total all function calls. How many function calls are there till level 3? How many function calls are there till level 3? 2 to the power n minus 1. This, will it be satisfying? That suppose I have Fibonacci, I want to calculate, has only 3 levels of function call. So what is the total number of function calls? 2 to the power here. If till here only I am having function calls, that okay, till 3rd level only my all function calls are there. It is giving me 7 function calls, right? Total number. That is equal to 2 to the power 3 minus 1. Is it correct? Is it correct? Right, sir. Okay, so if there are n levels, what is the total number of function calls? 2 to the power n minus 1. This is the total number of function calls we will have if we calculate Fibonacci number in the worst case. In the worst case, and this Fibonacci tree is a perfect binary tree and has n levels. So total number of function calls I will be having is 2 to the power n minus 1. This part. Okay. N is number of level also. Yeah, number of levels also. Now see, if this is the case, total number of time I will take, total time I require to calculate the nth Fibonacci. For calculating the nth Fibonacci, total time I require is 2 to the power n. Let's say each function call takes time k units. So what will be the total time for calculating Fibonacci, nth Fibonacci? So we'll multiply k into this. Yes.
Each function called takes k time. So total number of function call is 2 to the power n minus 1. So total time will be into k. Now what is the time complexity then? Keep everything between O, inside O. So this k is a constant, you can neglect. 1 is a constant, neglect. Finally, my time complexity will be 2 to the power n. This is the worst form of time complexity you may get to solve a problem. Worst. So So that's you- why it's taking a lot of time. Yeah. So I cannot till 20th, if n is less than equal to 20, this method, this recursive approach works fine. But once it gets greater than 20, you will get that okay, till this 20, you can assume that there is a very less rise of till this 20, I will get within 1 second, my result will be coming. After this 20, my time consumption will be rising exponentially. Exponentially, my time will be rising. Okay, this is the time. So it is feasible for me to use the recursive approach if I want to calculate Fibonacci till n equal to 20, till the 20th Fibonacci. Beyond that, this approach is a very poor approach. Okay, why? Because redundancy, multiple times same function calling, same function call increases. So this is a very poor thing. This takes a lot of time. Okay, f of 3, let's say, will get calculated thousands of time alone for some bigger value of n. So what's the point? That only this smaller thing is getting calculated thousands of time. So why should I use this? I can store the result of f of 3 somewhere. Somewhere I can store the result of f of 3, okay, and can utilize this again and again. Why to calculate it 1,000 times? So this approach that, okay, if any of my problem, okay, if any of my problem has a big time complexity or exponential time complexity, exponential, okay, such as 2 to the power n, this is exponential. I will do what? I will use some extra space. I will utilize some extra space. Likewise, we have done here. We have utilized extra array and we'll store the results. We'll store the results into it. And this will do what? Reduce the time complexity significantly. So this is what my dynamic programming says, that whatever you have calculated in your past, store it somewhere. Use this result again and again. That's what my dynamic programming says. Have you got a little bit of idea what is dynamic programming? Tell me that. सर वो डायनामिक प्रोग्रामिंग का कोड समझ नहीं आया इतने अच्छे से. चलो अभी आते हैं वहां पे. So you have got it that how again and again f of 3 we have been calculated how many times? 3 times. F of 2 5 times. F of 1 how many times? I have calculated here 3 times. F of 4 2 times. So redundant function calls again and again. I am calling the same function to getting calculated. This doesn't make any sense. Now see how this function will reduce our number of function calls. What has happened, man? Okay, see. I have done what? Made a list of 100 items, right? Okay, let's say for simplicity, let us keep it till 10 only as of now.
Okay, and every 10 numbers, all of the 10 numbers are initialized to 0. This is what my list fib is right now. This is my list fib right now. Okay, fine. So let's start. I want to calculate Fibonacci of 6. Okay, let's say I have called for fib of 6. What will happen? Start. I have called for Fibonacci of 6. Start, somebody. What will be happening? What will be happening? See the function and tell me what should happen first. From the beginning, what should happen? So first false हो जाएगा, second भी false हो जाएगा, third भी false. Is it? How many of you agree with Junaid? Fibonacci of 6. For this, I want to calculate the 6th Fibonacci. Is this condition true? So third की false होगा. ये देखो क्या लिखा n से हुआ है. बड़ा नहीं है ना, n 0 से बड़ा नहीं है. List of fib. Anything inside 6th Fibonacci has been calculated. Okay, as we run, I think you will get the answer. Let's just observe what is happening. N equal to 1. Is it true? Tell me that. No, sir. Is this true? N equal to 2. False. No, sir. Is this condition true? False, sir. Why is it false? So because list FIB का जो 6th element है वो 0 से बड़ा नहीं. FIB का 6th element क्या है फिर? देखो यहाँ पे सारे Zero एलिमेंट है. 0 है ना. Zero ग्रेटर सारे. देन 0 तो है नहीं. ओके फाइन, क्या करो, ग्रेटर देन 0 तो है नहीं. चलो ये भी फॉल्स. नाउ व्हाट विल हैपन? टेल मी. Fib of 1. Fib of 1 will be calculated, right? For it, fib of 1 will be calculated. Let's try that. It will calculate. It will create for itself fib 1. Okay, and that will be stored where? That will be storing what? Whatever will be returned by fib of 5. Fine. New function call. Again, start the execution from the first. What will happen? Fib of 4 will be called. तो तीनों false हो जाएगा. False हो जाएंगे. Okay, 3 conditions are again false, right? 3 conditions are again false. And then again, fib of 1, it will create a fib 1 variable for itself. It will create a fib 1 variable for itself, and that will be storing what? Whatever will be calculated by fib of 4, this function. Am I correct? Similarly, what will happen for this function? New function call. What will happen for this function? Tell me. So fib चलो ये of तीनों false हो जाएगा, फिर fib of 3 false हो जाएगा. Again, for fib of 4, this function call n equal to 4, right? And for this n is equal to 5. All functions are, all 3 first conditions are false. So again, it will create a fib 1 variable for itself, and that will be storing what? That will be storing what? Whatever will be returned, whatever value will be returned by fib of 3. This function call. Fine. Tell me what will happen here. For fib of 3, this function call, what will happen? N equal to 3 for this function call. What will happen here? the fib of 2 will be called. Again, these 3 function calls are what? False. These 3 conditions are false, sorry. Fib of 1, it will create a fib 1 variable for itself, and that will be doing what? That will be doing what? It will be creating fib 1 variable for itself, and that will be storing whatever will be returned by fib of n minus 1. What will be the value of n minus 1 here? Fib of 2. Okay, this will be storing whatever will be returned by fib of 2 function call. Fine, this part is done. Now again, now see what will be happening here. Fib of 2 has been called. What will be happening here? Don't be
Don't be in a pin drop silence mode. Respond so that I may also get that you are at least getting something. So second if statement chalegi. Okay, now see, fib of 2 has been called. Is this condition true? No. Is this condition true now? Yes. So see, what is this line says? List of fib of n equal to 1. What does this line says? Put the value of second to 1. Index 2 पे value 1 आ जाएगी. Index 2 पे list of fib. Inside this list, whatever is present in the second index, update that to 1, right? Now the value of this inside the list at the second index is 1. Fine. And what it will return from here? What it will return from here? 1. Okay, 1 will be returned and that will be stored where? 1 will be returned and that will be stored where? Fib of Fifth one. Fib 1 of what? Fib 1 of fib. This fib 3 function call, inside that a fib 1 variable is there. This one will be stored there. Okay. So this fib 2 has been calculated. This fib 2 has got completed. It is returning 1. This is returning 1. Where it will return? Inside the fib 3 function call. Wherever fib 1 variable is there, inside the fib 3 function call, 1 will be returned there. Okay, fine. Now tell me, fib 3, till what part fib 3 has got completed? Till what part fib 3 has got completed? Fib 3 has got calculated till this function call has been completed till what part? So fifth Okay, one. one part. Till here, right? Till the fib 1 completion, calculation part. Now it will calculate fib 2. It will calculate a fib 2. Fib 2, okay, has been declared. And yeah, that will be depending upon whatever will be returned by fib of 1 function call. Whatever this function call returns, that will be stored inside the fib 2 variable. Okay. Now, okay, if fib 1 is called, is this condition true? Is this condition true? If fib 1 is called, is this condition true? No, sir. Is it true or false? True, sir. Okay, true. So what it will return? What it will do? If this condition is true, what it will do? What it will do? sir, n index Return पे 0, sir. रहेगा. It will return 0, but before that, okay, it will make the first index as 0. It will make the first index as 0. It doesn't matter much because it is already 0, right? Does not matter much. So it will at first update. It will change the value at the first index. Already it was 0, so no matter of changing. Okay, 0, it will remain 0 only, and it will return 0 inside the fib 2 variable of fib 3 function call. Okay, it has returned 0. So okay, fib 1 part is done. Fib 1 has got successfully calculated. Okay, fib 2 is now being calculated as 0. Okay, this part is done. Okay, now tell me what will happen next. So let's do one thing. Okay, yeah, let's leave it as of now as it is. No need to worry. Okay, fine. These two things are done. Now what will happen? Till what point fib of 3 has got calculated? This function call has been calculated till what point? So fib 3. Sorry. Both the fib 1 and fib 2 variables have been calculated for this function call or not? Tell me that. Hello. Yes, sir, calculated. Okay, so what will happen? Next, this one will be executed, right? This line. So what will happen here? What will happen here?
I am inside this function call right now. I am inside this function call right now. At index 3, valuable 2. See here, what is the value of fib1 and fib2? 1 and 0. Yeah, is 1. Okay, so at index 3, what will happen? At index 3, value will be updated to 1, right? 0 plus 1 is 1. This value is updated to the what index? At the third index. Fibonacci of 3 is at the third index, store the value 1. Okay. And then do what? Store the value and then return list fib, whatever is present at the third index at list of fib, return that value. So that means fib of 3 has got successfully calculated. Fib of 3 has got successfully calculated. And inside the fib4 function call, the variable fib1, what I have, inside this 1 will be returned. 1 will be returned. Fine. Okay, now till what point this function has been executed? Till what point this function has been executed? So this fib4 was depending upon fib3 and fib3 was depending upon fib2. Right. So till what point fib1 has been calculated? This fib4 function call has been executed. Tell me that. This function call has been executed till what point? So fib4 तक कॉल हो गया ना? हाँ देखो ये मैं लिख के रख रहा हूँ. We are just writing it कि okay these has got completed. Both these functions calls has got completed. Now I am standing at fib4. I am standing at this function called fib4. See this. So now what I have to do? I have inside fib4, I have successfully calculated fib1. Now what I have to do? सर एक बार रिपीट करो ना क्या बोले? Sorry. एक बार रिपीट करो ना क्या बोले? Okay. Fib4 inside this function called fib4. Till what point have I completed the execution? Tell me. fib1 तक कर लिए सर. Fib1 till this point, everything is done or not? Tell me. Yes, sir. Okay. Now fib2 करेंगे. what we will do? We will calculate the fib2. We will calculate the fib2. From here, I will calculate the fib2 part. Okay, fib of 2. This has to be calculated. Okay, sorry, let me write it again. Now it will create another variable fib2, and that will be equal to whatever will be returned by Fibonacci of 2, right? Now tell me, this is a new function call. This is a new function call. Execution starts from the beginning. What will happen? So first is false. First is true. false. Second is true, right? Second is true. Okay, so it will return. It will return what to the fib2 variable? 1. Okay, 1. Fine. It will return to the fib2 variable 1. Fine. So both has been calculated. Fib of 1, fib of 2, both has been calculated. Inside fib4 function call, both fib1 and fib2 variables have been calculated. Now what will happen? Addition of those elements. Addition of fib1 and fib2 will be done. And then where it will be stored? In fib4. At index 4. At the index 4, Yes. 2 will be stored, and this 2 will be returned where? This 2 will be returned where? fib5. F of 5. Inside fib1 variable of fib5 function call, fib5, right. right? This 2 will be returned inside fib1 variable of fib5 function call. Fine.
Fine. Let me wipe out this. So, okay, for calculating fib of 5, what we have gone through till now, what we have gone through, Fib of 1. fib of 5 required fib of 4, fib of 4 required fib of 3, fib of 3 required fib of 2, right? And also fib of 4 also required another fib 2 call, right, for our calculation. So these function calls have been already calculated, Now, okay, fib 1 variable inside the fib 5 function call has got value 2. And now it will be till what point this fib 5 has been calculated? Tell me. Till what point this fib 5 has been calculated? Fib 1. Till fib 1, fib 5 calculation is done. Now it will calculate fib of 2. See here. Its fib 2 will be equal to what? Fib 2 variable will be equal to whatever will be returned by function call fib of 3, right? Correct. Fib of 1 has been calculated. Fib 2 variable will be calculated. Okay. Now see, this is the most recent function call. See, these things are already calculated. No need to see these things. See here only. This is the most recent function call. So what will happen? Execution starts from the beginning. What conditions are true and false? Now who will tell? Is this condition true? No, sir. Is this condition true? No. But is this condition true now? Yes. Yes, sir. So what will happen? Do I need to call again fib 2 and fib 1? No. Will there be any requirement? No, sir. What is happening rather? Whatever value is present here, I am directly returning that. Yeah, we'll take value from the list. Okay, I'm directly returning that. Fine. So what is happening? What will be returned inside fib 2? 1. What? 1, right? 1. Because this condition is now true. Fine. So fib 3, this function called fib 3 returns what? 1 inside fib 2 variable, right? This part is done. Okay, now what will happen? Fib 1, fib 2 inside fib 5 function has been calculated. Now what will happen? What will happen? Addition Addition of what? of fib 1 and fib 2. Both the variables value will be added, 2 and 1. And And will be stored updation where? of that. Yeah. 3. It in will the be updated index. inside the list as That's 3. fine. And that will be returned where? Inside the fib 1 variable of fib 6 function call. 2 plus 1, it will be now fib 1 will be storing value 3 because fib of 5 has returned that. Okay. So now tell me how many function calls we have done and how many are completed till now, till this position. I think fib 1. Fib 1 has got calculated, right? Fib 1 has got calculated inside fib 6 function call. That is to be what? 3. So how many function calls we have completed? Fib of 5, then fib of 4, Fib of 4, fib of 3. fib of 3, Fib and of then fib of 2, right? 2. For fib of 3, we have another function called fib of 1, right? This was also called at that time. And fib of 4 inside, we have another function called fib of 2. And we have another function called here fib of 3. This directly returned whatever was present inside the list, right? Okay, now these are among the completed ones. These function calls have got completed. Now see what will happen. Fib of 6 has been calculated, right? Fib of 1 for fib of 6 function call has been calculated. Now what it will do? What it will do next? Fib of 2. It will calculate the fib of 2. And what that will be equal to? Fib of 2 Fib of for 3. this function call. What it will be equal to? This will be equal to what? See here. Fib of 3. Is it? Here the value of n is 6. So what it will be? 4. Fib of 4, right?
Fib of 2 will be storing what will be returned by fib of 4. Okay, now for this function call, which one is true here? Tell me. Third one. Third. Third one, sir. Again, both are false, but this is true. So what will happen? What will happen? So we'll take value from list. List value is 2. Am I correct? 0, 1, Three. 2, 3, 4. So 2 will be directly returned. No more requirement of calculating anything. Whatever is stored at the fourth index of 2, return that. So now fib 2 what? Has got its value to be 2, right? No need to calculate fib 4 again, right? This part is done. So now what will happen? Fib 6, for fib 6, fib 1 and fib 2 both are calculated. What will happen? So add both the values and Add both the values and update that in the list. update that in the list. Update here 5 and return this into the print statement. Return this into the print statement. That's all. Return 5. So that's why if I try this problem, I will be getting 5 as my sixth Fibonacci number. So how many function calls we have managed to reduce? How many function calls we have managed to reduce? See, for if I want to calculate fib of 4 again, I have to calculate this all function calls again. Am I correct? If I use the recursive approach, these all function calls will again be called if I don't use this table. So all these functions are avoided just by this storage value, just by this storage value. Getting that part? How many function calls right now we are utilizing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So almost what is the maximum number of function calls that we have called till now, till using this example? You can say at most 2 twice. We can say at most 2 n function calls we have made. So if I use the storage table, my complexity of this problem is getting reduced to, big O of n. So from 2 to the power n, I have reduced my problem to big O of n using just a storage, extra space. I have reduced the time complexity of my problem to big O of n. Getting it? Sir, in DP, we'll solve all the problems by storing the values. Yes. Using the previous results, we will solve the problems. Now tell me what doubts you are having here. Tell me what doubts you are. इसमें space complexity बढ़ गया ना इसमें. Yeah, space complexity बढ़ गया. What is the Sir, space मतलब- complexity? What is the space complexity for this problem? Big O of n ना sir. Big O of n, right? What was the previous मगर one? The previous one, again, I'm coming to that point. What was the time space complexity there? तो sir preference किसको ज़्यादा देना चाहिए, space या time? तो टाइम को ना बेटर प्रेफरेंस सबसे पहले टाइम को देना पड़ेगा. एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं है, स्पेस का कोई स्पेस बचाने का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, कंप्यूटर के पास तो, मेरे लिए तो अनलिमिटेड मेमोरी है, मेरे लिए अनलिमिटेड मेमोरी है कंप्यूटर के पास. मैं अगर टाइम मेरे प्रोग्राम में रन करा रहा हूँ, उसके लिए मुझे आधा घंटा रुकना ही पड़ रहा है, तो मेरा फायदा क्या है? ऐसा तो काम नहीं चलता ना. वेबसाइट चलाते हो, google.com पे कुछ सर्च किया, ठीक है, गवर्नमेंट वाला वेबसाइट जैसे स्लो चलता है. अच्छा तो google.com पे सर्च किया, वो तुम्हें रिजल्ट लाके दे रहा है 1 हफ्ते बाद, तो तुम उसको दोबारा चलाओगे? पहले बताओ. No, 1 हफ्ते बाद, 1 week बाद, your page will be coming. And why? What was the why have you got that result? That okay, your जो भी Google चला रहा है, whoever is running the Google, he is saying that okay, inside our servers
inside our servers that page was not there, so we have to search for it, that where it was. We have brought that into our servers and that took 1 week. So will you listen to that excuse? You will say na कि why don't you increase your servers? भाई इतना लोग सर्फिंग करता है, तुम्हारा इतना रेवेन्यू है, तुम सर्वर्स क्यों नहीं बढ़ाते? क्या करोगे सर्वर्स नहीं इतना पैसा बचा के? So that's the point is, if my program is not efficient, what's the point of saving the space? What's the point of saving the space? No point, right? तो बेटर है मैं उसमें से कुछ यूटिलाइज कर लूं ताकि मेरा प्रोग्राम जो है एफिशिएंट बन जाए. दैट्स ऑल. The time efficient, huh? यस. कंप्यूटर में तुम्हारे इतने प्रोग्राम्स चलते हैं, कभी मालूम पड़ा है आज तक कि ये जो प्रोग्राम है स्लो फास्ट चल रहा है? Because your programs, and that's why now your more and more technologies are coming, such that within less space, how can I make my program very much efficient so that the user experience is very good with my Windows or other applications. So that's the main criteria. Whenever you will go into the industry, you will be given these things. So industry we only use DP. Who says? Nothing as such. The More advanced algorithms you will use there. Okay, more advanced algorithms you will use. That वो तो बस समझने में चलो महीना लगेगा कि चल क्या रहा है. So इससे भी advanced algorithms हैं. काफी वहाँ पे in industries, if you work for some good industries like Google and Microsoft, they utilize ML algorithms for their softwares. बहुत बढ़िया advanced levels के algorithms होते हैं. If somebody cracks Google just after they certain you that you are making a history. Okay, so I am telling you, as far as I have talked with the recruiter, they say that 6 months to 1 year you will be put to learning phase only. Then slowly you will be given the project. Something like that actually happens if you go to offices like Google Warsaw. So after completing the course. No, there is no course, but you will be given their resources to learn. Okay. There is no course or something like that. Then slowly you get into the projects there. This is what my recruiter told me while I was appearing for Google Warsaw interview. Sir, training ना like. Okay? कोई ट्रेनिंग नहीं होता, अलग बात है वो. ठीक. If somebody goes to Facebook, you will be given training for. There is a boot camp of 1 month there. वहाँ के tools, technologies कैसे हैं, क्या होता है, 1 month चलेगा तुम्हारा boot camp. Similarly, if somebody goes to Microsoft, similar kind of things will be there. तो सर मतलब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए एल्गोरिदम मतलब अलग अलग करना पड़ता है. बहुत तुम्हें एल्गोरिदम्स जानना ही पड़ेगा. अगर एल्गोरिदम से खेलना नहीं जानते, प्रॉपर्ली मैथ्स यूटिलाइज करना नहीं जानते, मुश्किल है. वहाँ पे जाके भी तो सीखना ही पड़ेगा ना ये चीजें. तो मतलब अगर करना है तो ऑलमोस्ट कितना एल्गोरिदम होता होगा रफली? जो अभी तुम लोग ने एल्गोरिदम तो बहुत है भाई, रोज कोई ना कोई नया पब्लिकेशन होता ही रहता है. ठीक है, अभी जो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए चाहिए वो हम पढ़ रहे हैं. मड सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बट द प्रैक्टिस इज न्यू है. सॉरी, सारे न्यू एल्गोरिथम्स हैं. नहीं, ये तो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम से यूटिलाइज होता ही है. इसके बियॉन्ड भी एल्गोरिथम्स है. जब इंडस्ट्री में जाओगे, बड़े जगहों पे काम करोगे, तब पता लगेगा कि क्या होता है. अगर साइंटिस्ट के पोस्ट में कभी काम किया, पता लगेगा कि वो एल्गोरिथम्स किस हद तक काम करता है. There are separate posts for applied scientists in those industries. That is the best post to work for. If अगर पूरा किसी को टेक फील्ड में रहना है, तो बेस्ट पोस्ट मिलेगा अप्लाइड साइंटिस्ट का. यही लोग कंपनी में जान डालते हैं. ठीक है, किसी भी कंपनी में हो, यही लोग होते हैं जो जान डालते हैं. ये जो मेरा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसके अंदर कौन सा एल्गोरिदम चल रहा है, वो कितना एफिशिएंट है, दोज थिंग्स आर डिजाइन्ड बाय दिस अप्लाइड साइंटिस्ट. ठीक है. And sir, data scientist. डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं? डेटा से खेलते हैं. मेरा अब बहुत डेटा साइंटिस्ट के बारे में तो मेरे को भी नहीं मालूम भाई. मेरा एक दोस्त डेटा साइंटिस्ट है इधर एक जगह पे, वही जानता होगा. Yes sir. तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ये जो आप सिखा रहे हैं बेसिक इंटरव्यू तो चाहिए. ये तो चाहिए ही होगा. पूरा प्रोफिशिएंट मांगता है इंटरव्यू के लिए. मुझे कोई लाके दो कि मैं जो भी ये सब कोडिंग चैलेंजेस देंगे, वो इसको तो पार कर ही लेगा. प्रोफिशिएंट मांगता है.
और इस प्रोफिशिएंसी के लिए प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस, एंड दैट प्रैक्टिस इज इन योर हैंड, हाउ मच यू प्रैक्टिस. That's why I say even after we are done, nobody will be leaving the practice. कहीं भी जाओ, कोई भी DSL का प्रैक्टिस नहीं छोड़ेगा. सर बोलो. प्रोग्राम के लिए रिकर्जन यूज करना और क्या हुआ? कौन से क्या? सर हम लोग को कैसे फिगर आउट करना पड़ेगा कि किधर रिकर्जन बेस्ट होगा कि डीपी? ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा. ठीक है, देख रहे हो वो तो क्या, इसी चीज के लिए कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ रहता है, कंस्ट्रेंट्स. ओके, यहाँ पे देखो 2 फिबोनाची फंक्शन कॉल्स है ना, 2 फिबोनाची फंक्शन कॉल्स है. तो इससे अगर देख रहे हो कि 2 बार इनसाइड अ फंक्शन 2 रिकर्सिव कॉल्स आर देयर, इनसाइड अ मेथड m 2 रिकर्सिव कॉल्स आर देयर. So assume that in the worst case 2 to the power n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है. तो ऑब्वियसली रिकर्शन से तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर 2 to the power n आ रहा है तो क्या होगा, n शुड बी लेसर देन इक्वल टू 20, मैंडेटरी है. अगर n मुझे 20 से ज्यादा फॉर वैल्यू ऑफ n 20 से ज्यादा हो रहा है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे, डीपी लगाएंगे. ठीक है, एवरी रिकर्सिव प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग डीपी. ओके, एक्सेप्ट सम सॉर्टिंग. सॉर्टिंग को डीपी से नहीं कर सकते. ठीक है, सॉर्टिंग में भी हमने रिकर्शन यूज किया था मर्ज सॉर्ट में. उस चीज के लिए कोई डीपी नाम की चीज नहीं है. दैट्स अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज बीन डिवाइस्ड इन सच अ मैनर दैट विल बी सॉल्व्ड यूजिंग n log n टाइम. Okay, tell me that how many of you are clear with whatever we have discussed today? Shall I go some way ahead or shall I stop here for today? Because I know कुछ तो hard लगा ही होगा. Don't be in a pin drop silence mode, please. सर बहुत हार्ड था. हार्ड नहीं है, तुम लोग देख पहली बार रहे हो इसीलिए. बहुत इजी है ये. हो सकता है यही सही हो. सर बाकी क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई होगा सोचना थोड़ा सा. करेंगे ना डिस्कस. अभी we will discuss tomorrow problems only. मत सोचो कि 2 दिन में डीपी सीख जाओगे. Whoever is thinking I will learn DP in 2 days, this is not possible. DP takes many days. At least 10 to 15 प्रॉब्लम करोगे तो आइडिया आएगा डीपी को यूटिलाइज कैसे करते हैं. ठीक है, दो this is not a very important, this is an important topic, but yeah, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, डीपी हार्ड लेवल का कभी नहीं पूछा जाता. इजी टू मीडियम लेवल के डीपी से ज्यादा कभी मैंने आज तक इंटरव्यूज में पूछते हुए देखा नहीं है. Amazon दिया हूं मैंने, Amazon दिया है, गूगल का इंटरव्यू दिया है, डी शॉ का दिया है. कभी भी इजी टू मीडियम लेवल के बगैर मैंने डीपी पूछते हुए नहीं देखा. ठीक है, सेल्स फोर्स का एग्जाम दिया था, मैं सारा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. सेल्स फोर्स का एग्जाम दिया था. सर प्रैक्टिस के लिए क्या था आपने? मेरा तो प्रैक्टिस बहुत दिन का है रे भाई. Amazon में मैंने 3 राउंड क्रैक किया था. ठीक है, राउंड 3 के बाद मैं आउट हुआ था. गूगल में तो चलो उनका बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है. I was out after round 1 only. D show I have cracked. This is my major achievement till now. ये फुल मैंने क्रैक कर दिया था D show. And Salesforce में yeah, requirement was something else. So yeah, after the exam only, that was fully related to Python, and they were wanting someone that has at least some experience in software testing, you can say, or quality assessment.
सो ये QA पार्ट मेरा था नहीं, मैं तो ऑलमोस्ट फ्रेशर था सेल्सफोर्स के। इस जगह पे पाइथन के मैंने सारे प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए थे एक्सेप्ट वन, दैट वाज सम एडवांस कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नॉट ये कोडिंग, तुम्हारा API वगैरह हैंडलिंग से रिलेटेड था, ठीक है, जो तुम लोग भी सीखने जा रहे हो कुछ दिनों बाद फुल स्टैक में। तो ये मेरे से नहीं हो पाया था, दैट्स आई बस आउट हो गए थे सेल्सफोर्स पे। उसके बाद एक और कोई कंपनी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सो उस कंपनी में 60 एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे, सिर्फ 60 एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे, तो उसमें मैंने 45 कर दिया था। नॉट रिलेटेड टू या कोडिंग रिलेटेड, कोडिंग तो नहीं था बट इसमें मैथ्स था, क्लास 10-12 में जो मैथ्स करते हो वो था, तो मैंने 45 कर दिया था। तो कोडिंग पार्ट नहीं था? नहीं था इसमें, कोडिंग बाद में आता शायद, पता नहीं, नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा है इस कंपनी का। सर किस ईयर में किया था? थर्ड आउट पे गए थे। मैंने आफ्टर फोर्थ ईयर के बाद इतने सारे कंपनीज दिए थे। फोर्थ ईयर में मेरा मेजरली मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया था अपने थर्ड फोर्थ ईयर में। तो इस टाइम मैं अपना बात बताता हूँ, व्हाइल आई वाज स्टूडेंट मैंने हैक विथ इन्फी दिया था। किसी ने सुना है हैक विथ इन्फी का नाम? नो सर। हैक विथ इन्फी इन्फोसिस हैकाथॉन कराता है इंडिया में 2 पोस्ट के लिए। नॉर्मली इन्फोसिस जो है 3.5 लाख की सैलरी देती है, ठीक है, फ्रेशर्स को, बट इन्फोसिस इस एग्जाम में हैक विथ इन्फी के थ्रू किसी को लेती है तो 5 लाख का पैकेज देती है और 8 लाख का पैकेज देती है। 5 देती है SES को, सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट एंड पावर प्रोग्रामर, ये 2 पोस्ट है उनके, स्पेशलाइज्ड पोस्ट है ये दोनों। तो हैक विथ इन्फी में आई वाज व्हाइल माय फोर्थ ईयर आई वाज टॉप 3% ऑफ इंडिया, I was top 3% of India, so I got this post SES. Moreover, TCS के बारे में नाम सुना है? TCS कोड बीटा? Yes. TCS कोड बीटा में भी स्पेशल पोस्ट होता है। TCS नॉर्मली TCS किसी को उठाती है कॉलेज कैंपस से, अगर नॉर्मल कॉलेज से पढ़ते हो तो उनको कितना देती है? 3.36 लाख देती है, ठीक है, 3.36 लाख किसी को भी उठाती है। अगर कोड बीटा के वाया जाओ तो तुम्हें एक चांस मिलता है, नाम क्या है पोस्ट का, डिजिटल पोस्ट का, मेरे एक दोस्त को मिला था, डिजिटल पोस्ट है, डिजिटल पोस्ट ऑफ TCS। दिस डिजिटल पोस्ट गिव यू 7 lakhs in TCS. दिस इज अ स्पेशलाइज्ड पोस्ट। ओके, सो TCS कोड बीटा के 2 राउंड होते हैं, एक जॉब के लिए होता है TCS, राउंड 1 होता है दैट इज फॉर जॉब। सो चलो, इंटरव्यू मेरा बहुत बुरा गया था क्योंकि पूरे सीजन का पहला इंटरव्यू दिया था मैंने TCS में। और राउंड 2 होता है, राउंड 1 क्वालिफाई कर लिया था, राउंड 2 दिया था, तो मेरा वर्ल्ड वाइड रैंक 149 आया था, वर्ल्ड वाइड रैंक 149 आया था। और टॉप 25 को ये लोग वर्ल्ड फाइनल्स पे बुलाते हैं, ठीक है, और तब जाके TCS इनोवेटर का पोस्ट मिलता है। TCS इनोवेटर का ये सबसे बड़ा पोस्ट होता है, उनके R&D लैब्स में तुम्हें काम मिलेगा। पता नहीं इसमें TCS टोटल कितने जाते होंगे सर? 25 को नहीं सर, बुलाते हैं। पेपर देने हैं। पेपर देने बहुत आते हैं। बहुत है यार, मिनिमम 2-3 लाख तो देते ही है यार, मिनिमम बोलता Without official degree, without college degree, हम दे No, you should be a 4th year student, okay, you should be a 4th year student to give this TCS code beta for jobs and world finals। तो चलो थर्ड ईयर को भी ना, थर्ड ईयर को नहीं बुलाते, सॉरी, थर्ड ईयर को बुलाते हैं। 4th year, if you want to take the job you have to be a 4th year student or the last year student at any college। MTech भी कर रहे हो, MSc भी कर रहे हो, तो लास्ट ईयर स्टूडेंट हो गए तो बुला लेंगे। बीटेक के बाद ना सर, मतलब बीटेक के लास्ट ईयर में, ठीक है। मोर ओवर ये जो 4th ईयर है, किसी ने ACM ICPC का नाम सुना है? ACM ICPC, मैं इसके रीजनल्स तक गया था अपने 4th ईयर में, यही है, यही बात है, दैट्स ऑल। मेजर 4th ईयर में मैं कुछ ज्यादा कुछ करने, जो भी टेस्ट सब पाइथन में देते? नहीं, मैं अपने कोडिंग के लिए हमेशा C++ यूज करता हूँ। दैट्स सर इतना ही बेसिक आया होगा क्या सर? कितने में सर जितना हम लोग को पढ़ा रहे सर, तो हाँ, इससे ज्यादा तो इंटरव्यू वगैरह में इससे ज्यादा नहीं पूछते इतना, तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने बता ही दिया, कोई नहीं पूछता इससे ज्यादा। मतलब कि सर जिसमें पेपर देने गए तो उनमें पेपर जो हायर लेवल राउंड 2 वगैरह में जाओगे ना, राउंड 2 अगर सिर्फ कंपटीशन में जाना है, जैसे कि कोई जॉब वगैरह का बात नहीं है, कंपटीशन में जाना है मेरे को, तो वहां पे हाई लेवल, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आ सकता है, बट वो कंपटीशन है, उसमें कोई जॉब रिलेटेड फैक्ट नहीं है। अगर जॉब पे जा रहे हो तो अभी जितना हम कर रहे हैं उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए, गारंटी दिया, बस तुम्हें और थोड़ा एक्सटेंडेड प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
लीड कोड वगैरह में, दैट्स ऑल। या फिर अभी जो कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ जाओ तो भी बात तो बन जाएगी, उससे ज्यादा नहीं पूछता। सर ये निंजा क्या है फिर? टीसीएस निंजा, हाँ टीसीएस निंजा, कोड बीटा के वाया एक और पोस्ट मिलता है निंजा, मेरे को ठीक है निंजा। सो निंजा में ज्यादा सैलरी डिफरेंस नहीं रहता, उसमें 3.36 लाख ही देता है, वेरी बैड रैदर। ठीक है, तो ये ऐसे पोस्ट के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ 3-3.5 लाख जो टीसीएस देती है और इन्फोसिस देती है। एक्चुअली मुझे ये पोस्ट पसंद नहीं है, ठीक है, काम बहुत कराते हैं यार, बहुत ज्यादा काम कराते हैं और इतना सैलरी देते हैं। मतलब किसी, देखो मेरा पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ, किसी तुम टीसीएस वगैरह इन्फोसिस में अगर काम करते हो, किसी लोअर ग्रेड टाउन में तो रहोगे नहीं, जाओगे कहाँ, चेन्नई जाओगे, ओके चेन्नई जाओगे और फिर जाओगे बैंगलोर, उसके बाद फिर और कहाँ, गुड़गांव है, दिल्ली है, ये सब जगह मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाओगे, वहां पे 3.36 लाख का सैलरी देता है। यहाँ पे ना तो कुछ सेव होता है और ना ही तो स्पेंड सही से कर, अपने ही ऊपर जाने आने खाने रहने का खर्चे में ये पूरा सैलरी चला जाता है। ठीक है, सो दैट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम सर आप कहाँ से हो अभी? मैं वेस्ट बंगाल से। अच्छा, ठीक है, बहुत दिक्कत, तो यही बात है। मेजरली मेरा इन्फोसिस में ही हुआ था व्हेन आई वाज इन माय 4th ईयर, बट या 4th ईयर में मुझसे ज्यादा कुछ अच्छा हो नहीं पाया था। आफ्टर 4th ईयर आई हैव डन समथिंग। 2 महीना तो ये लोग टीसीएस बेंच पे रखते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ये जो कमतर पोस्ट में रहोगे तो रहेगा, हाँ, छोटे छोटे पोस्ट में रहोगे। जैसे मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि इन्फोसिस में नॉन टेक बैकग्राउंड, मतलब कि किसी और बैकग्राउंड से हो तो नहीं होगा, इन्फोसिस सबको लेता है। बट फैक्ट इज प्रोजेक्ट दैट यू गेट आर नॉट दैट गुड। इनफैक्ट तुम जो अभी सिस्टम डिजाइन वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हो, इसका हार्डली ही कोई काम होता है इन्फोसिस एंड टीसीएस लाइक कंपनीज में, राइट। मोरओवर सपोज दैट मैं इन्फोसिस से आई वांट टू ट्रांजिट टू Amazon, और ऐसा तो नहीं ना कि तुम 4 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हो, बोलोगे मैं SD1 में काम करूंगा, ये नहीं होता। बोलोगे कि ऑब्वियसली आई विल गो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 2 बिकॉज आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एट इन्फोसिस। अब ये ऐसा तुम्हें सिस्टम डिजाइन पे फेक का क्वेश्चन करेंगे कि दैट यू हैव नेवर वर्कड विद इन इन्फोसिस, दैट विल बी योर डीमेरिट। एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है, बट इस फेज में तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है। This is what happened in my Amazon also, that okay, while I was given a question on system design, I was dumbstruck, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। DSL को ठीक है, DSL को अपनी जगह बहुत अच्छा हुआ, बट once एक ही क्वेश्चन दिया सिस्टम डिजाइन का, that time I was dumbstruck, मुझे कुछ आता ही नहीं था। आएगा कैसे, कभी काम किया ही नहीं है। ये मत सोचना कि मैं किसी स्टार्टअप में मतलब किसी छोटे मोटे कंपनी में चला जाऊंगा तो बहुत ज्यादा सीख लूंगा। यू हैव टू मीन्स, और किसी भी रैंडम कंपनी में अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा, ये नहीं होता है। ठीक है, हर जगह बिफोर अप्लाइंग सी कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स आर, यू हैव टू व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स आर, एंड उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास नॉलेज है या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे उसके ऊपर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सिंस कि तुम लोग फ्रेशर हो, मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ यू आर फ्रेशर्स, DSA इज अ मेजर पार्ट। DSA बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज DSA पूछता ही है। Okay, once in the tech field, you have worked for 2+ years, they will start along with DSA तो रहेगा ही, they will start focusing on your system design part. Okay, अगर better companies में जाना है तो, अगर better companies विदाउट में ऑफिशियल डिग्री, विदाउट कॉलेज डिग्री हम अटेम्प्ट कर सकते हैं Amazon वगैरह की इंटरव्यूज? बाहर का पता नहीं, गूगल अलाउ करती है, बट फैक्ट ही अगर तुम विदाउट ऑफिशियल कॉलेज डिग्री जाना चाहते हो गूगल में, तो बाहर के ऑफिस में अप्लाई करना बेटर होगा। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप हुआ। सब मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए सबके लिए इंटरव्यू के लिए? नहीं, मैथ्स नहीं पूछता। और गूगल का एक पॉइंट है, इवन इफ यू आर नॉट फैमिलियर विथ एनीथिंग, गूगल लाइक सिस्टम डिजाइन एंड ऑल, गूगल विल गिव यू सम मटेरियल टू प्रिपेयर। ओके, और तुम जितना टाइम मांगते हो गूगल तुमको उतना टाइम देता है। 2 महीना चाहिए वो दे देगा कि चलो 2 महीने बाद शेड्यूल करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू। एप्पल का भी सेम है सर, देयर रिक्रूटर्स आर वेरी गुड। भाई गूगल का मैंने जो रिक्रूटर देखा था, उससे अच्छा रिक्रूटर मैंने कभी नहीं देखा है आज तक। ठीक है, इतना अच्छा। एक बार एप्पल ट्राई कीजिए, मेरे को बाद में देखेंगे यार। उनका भी सेम है कि वो पहले मटेरियल आपको पूरा देंगे, टाइम पूरा देंगे, फिर उसके बाद कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि गूगल बहुत स्काई रॉकेटिंग क्वेश्चंस पूछता है, गूगल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है, नॉर्मल सा है, इतना बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछता है स्टार्टिंग राउंड 1 में। तुम्हारा इसी में वो देखता है कि तुम करते क्या हो, कोड स्ट्रक्चर तुम्हारा कैसा है, क्लीन कोड लिख पाते हो, तुम्हारे कोड को ऐसे लिखते हो कि जो भी इंटरव्यूअर है वो समझेगा अच्छे से, तुम्हें समझाना भी पड़ेगा, वो समझेगा भी सारे पॉइंट्स, वॉट एवर दे विल बी इवैल्यूएटिंग ऑन। If you are good at every point, then only you advance to the next round of interviews. Okay, then only you advance to the next round of interviews. It's not that कि मैं कोई भी जैसा तैसा करके निकल जाऊंगा, गूगल बोलेगा, मुझे जो रिव्यू दिया था उन्होंने मुझे बोला था कि ओके तुम्हारा सब, मुझे बोला था ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फाइन फॉर यू बट योर कोड स्ट्रक्चर वाज नॉट गुड, so interviewer could not follow what you were doing. So because of this primary reason I was rejected from the interviews. Okay, मेरे ही एक बैचमेट को, मतलब एग्जैक्ट बैचमेट नहीं है, डिस्टेंट बैचमेट है कह सकते हो, मेरी यूनिवर्सिटी के अंडर ही पढ़ता था, ही इज गोइंग राउट नाउ टू गूगल व्हाट्सएप। सर कोई एज लिमिट होती है क्या? नहीं, सर कोई इन सब में? एज लिमिट नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सर आपने कुछ दोबारा क्यों नहीं दिया? क्या दोबारा सर रिट्राई? हाँ वो करेंगे ना। सर हम कुछ लिमिटेड कंपनीज में ट्राई कर सकते हैं ना देन। ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो फ्रेशर्स हो, फ्रेशर्स के लिए तो पोस्ट ओपन होता है। सर वी आर नॉट हैविंग अ कॉलेज डिग्री देन इसलिए। व्हाई? ऐसा नहीं होता, गूगल में ऐसा नहीं होता। नो सर, not about Google, any other companies like Yeah, Amazon. you can. You are having at least a degree, right? At least a degree. Or if you are fearing that, okay, my degree will hamper me, you can then go in some company then that pays decent, at least 7 to 10 lakhs. Right? And after that, you can try it for Amazon. You will be getting a decent experience still here. गूगल का रिक्वायरमेंट रहता है क्या, मतलब नहीं, कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट पाइथन में ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। पोस्ट देखना पड़ेगा किस पोस्ट के लिए हायरिंग है, तो फिर उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हायरिंग करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है बस। हाँ, स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है कि इस स्किल्स में मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए जिसने इस कुबरनेट्स वगैरह वगैरह में काम किया है। ठीक है, मैं तो ये पोस्ट नहीं दे सकती, ये रिक्वायरमेंट हर कंपनी में होती है। ठीक है, और मेरे को कुछ याद आए कौन सी जगह पे इंटरव्यू दिया था तो बताऊंगा। स्टार्टअप्स में दिया है बहुत, प्रेप बाइट्स में दिया था, और उसके बाद मैंने कीट्स ऐप, वाइल माय फोर्थ ईयर मैंने कीट्स ऐप में काम किया था, स्मॉल स्टार्टअप ऑफ हैदराबाद। इनके पाइथन का जो कोर्स मटेरियल है कुछ हद तक वो मैंने बनाया था पाइथन का। ठीक है, दैट्स ऑल। गिग्स फॉर गिग्स में मैं कंटेंट राइटर था कुछ दिन, 3 मंथ्स के अराउंड। गिग्स फॉर गिग्स ये मेरा स्टार्टिंग था, गिग्स फॉर गिग्स में काम करना। हैकरऑर्थ, ये इस जगह पे मैंने बहुत दिन प्रॉब्लम सेटिंग टेस्टिंग किया है। ये जो इन्फोसिस वगैरह का एग्जाम लोग देते हैं और भी है, वहां पे मेरा क्वेश्चन अराइव हुआ है, आया है। ठीक है, बहुत दिनों की बात है यार। So that's what about little bit of me. This what. खैर चलो, आज बहुत डिस्कशन हो गया है सब आप पे। अभी करंटली मतलब अटेन्यू के लिए या साइड में भी कोई जॉब है आपको? है, करते हैं कुछ प्राइवेट जॉब्स यार। सर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर नो? एज ए या कह सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट में क्या फर्क है? वहाँ पे डेटा रिलेटेड काम होता है ज्यादा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तुम्हें नहीं करनी पड़ती अगर तुम डेटा साइंटिस्ट हो तो। ज्यादा एडवांस डेटा साइंटिस्ट होता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अप्लाइड साइंटिस्ट सबसे बड़ा पोस्ट होता है कहने को टेक्निकल फील्ड में, क्योंकि वो मैंने कहा ही, वो मेजॉरिटी जो एल्गोरिथम्स बनाना वगैरह होता है वो वही लोग देखते हैं। उसके बगैर कंपनी चल नहीं सकती अगर वहाँ पे काम नहीं होता है तो। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है? उनका बहुत डाइवर्स, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, ऐसा नहीं है। पाइथन, रिएक्ट। ओके,
Yeah, I have started the MCQs. Please see. Yeah, I have created the attendance also. Those who don't have any doubt, you can mark your attendance as well. हेलो सर। बोलो। सर वो जो सीसी का तीनों क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को। कौन सा क्वेश्चन है? वीक 12 डे 2। वीक सॉरी वीक 12 डे 2 का समझ में नहीं आया तीनों क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? दिखाओ मुझे, शेयर करो स्क्रीन। स्पेस वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया। कौन सा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट। ओके, या विल डिस्कस इट टुमारो। कितना होता है रिकर्सिव अप्रोच में, क्या होता है? ओके सर। Balanced tree, is it a balanced or not? Okay, yeah, this is again a question, right? Haven't discussed this part with you. Okay, I will discuss, don't worry. What is balanced binary tree? ये मैं discuss कर दूंगा, ठीक है? Merge two binary trees, ये तो simple सा question है. Right steps to, अच्छा ये जो तुम्हारा हिपीफाई है ना, हिपीफाई कैसे करते हैं वो क्वेश्चन है। सर वो दो हुआ नहीं। कौन सा नहीं हुआ? ट्राई कर सकते हो कि हिपीफाई में कैसे करूंगा। ओके, आई विल शो यू। नो तो मैंने बोला है मैं सैटरडे को हिपीफाई वाला टॉपिक जरूर लूंगा, लेना ही पड़ेगा। सर कल या सॉरी जैसे आपने करवाया वो तो इनबिल्ट फंक्शन से करवाया है। वो तो इनबिल्ट से किया है ना, ये भी बात है। सर ये मर्ज वाला, मर्ज तो देखो इजी सा प्रॉब्लम है। 2 और 1 देखो दोनों रूट को ऐड किया तो 3 हो गया।
देन दोनों के 2 और 1 का जो लेफ्ट चाइल्ड है दोनों को ऐड करो, 4 हो गया दोनों। सर वो समझ गया। ठीक है, रिकर्सिवली रूट ऐड करेंगे। हाँ रिकर्सिवली। और अगर चाइल्ड नोड नहीं है किसी भी पोजीशन पे तो उसको क्रिएट करेंगे और जो भी प्रेजेंट है उसको वहीं पे उसका वैल्यू असाइन कर देंगे। देखो जैसे 1 का दिस 1 नोड, एक 3 है एक 1 है नोड में, ठीक है। तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड है 5, 1 का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है 4। 3 का लेफ्ट चाइल्ड है बट 1 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो 3 का क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे जो फाइनल होगा ट्री उसमें 4 नोड की एक ही लेफ्ट चाइल्ड होगी एंड दैट विल बी हैविंग वैल्यू 5। सिमिलरली 1 की 4 की राइट चाइल्ड होगी एंड दैट विल बी हैविंग ओनली वैल्यू 4। सिमिलरली यू हैव टू अप्रोच द प्रॉब्लम। टाइम खत्म हो गया ना इसका? कल सुबह तक है सर, 11-12 बजे। PP5 एक बार ट्राई कर सकते हो। टाइम इंक्रीज कर दिया शायद फर्स्ट वाले का। ओके ओके फाइन। PP5 हो गया। एक BST हाइट बैलेंस BST वो मुझे डिस्कस करना है, वो तो चलो छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा 1 बजे तक है सर। ठीक है, अगर हो सके तो ट्राई करो, पूरा न्यू थिंग है PP5 करना। तो सर फिर वो थर्ड वाला ही कर पाएंगे ना हम लोग, फिर थर्ड वाला ही करके दे देंगे। करो जो कर सकते हो करो अभी, क्योंकि हाइट बैलेंस मुझे लेना पड़ेगा क्या है, ABL ट्री का कॉन्सेप्ट है वो रादर। एंड डोंट Thank you, थिंक sir. भाई इट्स ओके यार, थैंक यू। अगर समझ में ना आया तो ये मत सोचना कि DP नहीं होने वाला, DP जरूर होगा, but yes DP takes time. There is a systematic approach for doing this DP problem. So for DP we have to first think the problem recursively, and after that how will we store, use the store mechanism. These all things are required, okay. And beyond that again we have another approach for approaching the DP problems. So don't think that, don't feel that we won't be able to do the DP part. ऐसा नहीं होगा, होगा तो जरूर, बस थोड़ा give this DP topic some time. 10 to 15 problems minimum you have to do before getting a hand there, okay. तो जितने भी बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस किए हैं और जितने भी रिकर्शन से किए हैं वो सारे हो जाएंगे DP से? नहीं, वो DP उसमें चाहिए ही नहीं, उसमें DP वो तो नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए DP नहीं चाहिए होगा। जितना मैंने समझाऊं, मतलब अगर फंक्शन एक बार कॉल हो रहा है तो चलेगा रिकर्सिव, और एक से ज्यादा बार हो रहा है तो उसके लिए DP सही रहेगा। देखो कि नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कितना हो रहा है, 2 to the power n में जा रहा है तब DP, तब वहां पे रिकर्शन तो नहीं कर सकते, 2 to the power n से कम है तो कर सकते हैं, दैट्स ऑल। DP is a huge topic. Fact is this, firstly. Fine. Good night, all of you. Okay, we'll meet tomorrow. गुड नाइट सर। Good night. गुड नाइट सर। अरे यार सौरभ कहाँ गए थे? मैं यहीं था। आपका ध्यान नहीं था। हाँ बात सही है, आज बात करते करते और ध्यान ही नहीं आया इधर पे। अब वो लंबा चौड़ा डिस्कशन चालू हो गया, TCS Amazon, तो ठीक है। चलो अब तुम लोग की बारी है, जाओगे वहां पे, अच्छे से काम करो। ऑलरेडी दे चुका मैं। अच्छा TCS दिया था? हाँ। क्या हुआ था वहां पे? इंटरव्यू के लिए गया ही नहीं। क्यों? इच्छा ही नहीं थी। अच्छा फिर यहाँ गए डायरेक्ट? 3.3 का पैकेज। तब तुम्हारे ईयर में तुम 2019 पास आउट हो ना? 20 or 20 2019 is the first year of Hack with Infi, as far as 2018 sorry, जितना मुझे याद आ रहा है 18 था। हाँ दिया था ये Hack with Infi। मैं तो ये इसके थ्रू गया था, कोडविटा। अच्छा चलो बढ़िया।
एग्जाम लिख दिया था, हो गया था। इंटरव्यू का कॉल था, गए नहीं। हाँ वही कोड बीटा के थ्रू, मतलब हम भी गए थे अपने टाइम पे इंटरव्यू देने के लिए। नहीं, मैं आ गया था लेकिन मैं गया ही नहीं। मैं बोला 3.3 में क्या करूंगा। ये एक क्योंकि प्रॉब्लम है। मेरा एक फ्रेंड है, वो टीसीएस का एक जॉइंट वेंचर है ना, सिस्को। सिस्को में कर रहा है, तो वो मेरे को बोल रहा था कि मत कर भाई। अच्छा, सिस्को उनका जॉइंट वेंचर है, ये मालूम नहीं था। तो हाँ, सिस्को तो मैं भी बड़ी जॉइंट, कंपनी है यार। हाँ कुछ सिस्को में जितना एम्प्लॉय है वो पूरा टीसीएस के थ्रू है। मे बी हो सकता है। इंटरनल जॉइंट वेंचर है। हम्म। सैलरी टीसीएस पे करता है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो गया है? यस। जानता नहीं था ये मैटर में। और मतलब 2019 18 से हम्म। 18 से ऐसा यानी 18 से तो मैंने सुना है कि टीसीएस पे कर रहा है। अच्छा, तो टीसीएस ने सिस्को को खरीद दिया क्या? यही तो बात है। तो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है इंडिया के लिए कोलैबोरेट किया हो। ना, इंडियन सब ऑफिस कैसे चल रही है वो देखना पड़ेगा, तो सबऑर्डिनेट होगा ना। हाँ, इवन ठीक है। जो आईडी बन रहा है उसमें एक साइड पे सिस्को का नाम लिखा है और सेकंड साइड में उसका टीसीएस लिखा है। ये अच्छा ठीक है, जानना पड़ेगा यार, ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि मेरे सिस्को को इज अ रिलेटिवली फार बेटर कंपनी जितना मैं जानता हूँ। बहुत बहुत डिफरेंस है। हम्म। अभी तो उन्होंने टेक्नोलॉजी भी चेंज करने के पीछे दौड़ रहे हैं। मैं सिस्को, मतलब सिस्को जो वेबएक्स है वगैरह वगैरह, उनका जो मीटिंग, हाँ, और फिर से बहुत सारा जो उनका प्रोडक्ट्स है वो बहुत बड़े बड़े कंपनीज में वन ऑफ द यूज होते बेस्ट प्लेटफॉर्म है हैं। वेबएक्स। सिक्योरिटी टर्म्स में सिस्को इज वेरी गुड, ये मानना पड़ेगा। जितना जैसे मेरा छोटा भाई एलएलबी कर रहा है मेरे व्यू से, हम्म। तो उनका जो कॉम्पिटिशन्स है वो पूरा का पूरा सिस्को पे होस्ट होता है। हम्म। और बहुत ही स्टेबल, बहुत स्टेबल है। वो तो है। जूम से भी स्टेबल है। जूम तो चलो नया आया है भाई, जूम जूम इज है। न्यू, बट या इट स्टैंड्स नोवेयर टू वेबएक्स। अगर किसी को अपना फंड खोलना है तो वो, और अगर अपने सिक्योर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो वो कभी भी वेबएक्स के अलावा कुछ यूज करेगा ही नहीं। नहीं, जैसे हम लोगों का एक सर ये वो है। सैप सिक्योरिटी से भी अच्छा होता है। सैप के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। सैप लैब्स इज अगेन वेरी गुड कंपनी। सैप लैब्स है ना, वहाँ का जो वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह है बहुत अच्छा है। सैप लैब्स हुआ, सेल्स फोर्स हुआ, VMware VMware के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बट या सेल्स फोर्स, स्लैक हुआ, इन जगह पे, स्लैक भी बहुत अच्छा है। इन जगह पे जाओगे ना, काम करके मजा भी आएगा और उतने आराम भी मिलेगा, वर्क लाइफ बैलेंस भी है इस जगह पे। हाँ सर, मुझे हमारा जो रिलायंस में काम था वो सब सैप पे होता था। ना वही सैप इज गुड। सैप तो बहुत बड़ी तो उसमें कंपनी सर है। लेकिन बहुत कुछ याद रखना पड़ता है उसका। हो सकता है। उसके बाद फिर तुम्हारा लॉग इन करोगे तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह है, तो कॉमन चीज है। हाँ सर, ये हर जगह बहुत नहीं कुछ होता है, ये सब। बहुत कुछ है। हम लोगों का एक ये है ऑफिस, ध्रुवी इंटरप्राइजेस करके, वो भी बहुत बढ़िया है। उनका पूरा काम यही है ट्रेनिंग का। हम्म। वो लोग भी सिस्को ही होस्ट करते हैं। मेरे को और मुझे लगता है कि जो तुम्हारा दोस्त काम मेन से काम नहीं करता, क्या बोले? वो कहीं और काम करता है। तुम्हारा जो हाँ, दोस्त है वो मेन सिस्को में काम नहीं करता। पता नहीं है, आइडिया मुझे नहीं है। एक्चुअली दो पार्ट है, अब मैं भी नहीं हम्म। जानता, वो भी बात है। बट यस, TCS एंड सिस्को का मुझे जितना एक ये है, पार्टनरशिप है टू हम्म। बिल्ड सम सॉल्यूशंस एंड ऑल। शायद वैसे कोई फर्म में कोई ऑफिस होगे, शायद तुम्हारे हाँ, ये काम करते होंगे। हो सकता है। मेन सिस्को तो यार अमेरिकन कंपनी है, वो क्यों मतलब TCS उसको पे करने जाएगा, यही तो मैं सोच रहा हूँ। पता नहीं है, उसने मुझे आईडी भेजा था तो उसका दोनों सिस्को और टीसीएस दोनों लिखा था। वही है बोले ना, सैलरी, उनका पार्टनरशिप है किसी किसी जगह पे। हाँ सैलरी टीसीएस से आ रहा है बोले। बोले बढ़िया है। कुछ भी हो यार, तुम लोग तैयारी करो, चलो तुम्हारा भी इंटरव्यू आ रहा सर, है, अच्छे एक से एक देना। एक एक क्वेश्चन था। बोलो। ये कंप्लीट होने के बाद में
मिनिमम पैकेज कितना ऑफर होगा? मिनिमम पैकेज आई गेस 5 ऑफर होगा। अच्छा, होगा ही डेफिनेटली। होगा ही। ओके, वो मिनिमम है, बट दैट डजंट मीन कि तुम 5 का ही मतलब अप्लाई करो, ये करोगे, कोशिश करो, ठीक है, इतना तो मिनिमम है, मिलेगा ही। नहीं मैं ऑलरेडी 3.34 स्किप कर चुका हूँ। You should all of you should have a target that a minimum for us will be 10, because 10 is very necessary as of now, इतना मैं जानता हूँ। ओके, तुम लोग करोगे भी यार, बहुत जन तुम लोगों ने बहुत बढ़िया टेकअप किया है, जस्ट लर्निंग दिस फर्स्ट टाइम। वेरी अप्रिशिएशंस टू यू पीपल फ्रॉम माय देखिए एंड। उसमें कहीं आपका भी हाथ है। ऐसा नहीं होता। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं तो चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ, राइट, ऐसा ही होता है, हम लोग तो बस ताली रास्ता एक- दिखाते हैं, करते तो तुम ही लोग हो ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं बस रास्ता दिखाने के लिए हूँ यहाँ कि भाई तुम्हें किस रास्ते से जाना है, यही बात है। करोगे तुम ही। हाँ वो तो है। That's the thing, और that's why many appreciations to you people। तुमने इतना अच्छा इतने कम टाइम में इतना बढ़िया टेकअप किया है। अच्छा, मुझे ये आपका जीमेल आईडी मैसेज कर देना ना। ओके ठीक है, कर दूंगा। फाइन, चलो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। Right, sir. गुड नाइट।